Good afternoon, everyone. Welcome to today's live session for commodities. So today we have gathered specially for the NSE Crude Oil Options Expiry. So first of all, let me introduce myself. Myself, Durgesh Ugwekar. I am into the research team for commodities. I look after the technical parts. So today we will take you through the एनएसई ऑप्शंस एक्सपायरी एनएसई का जो आज ऑप्शंस का एक्सपायरी है उसमें आप क्या ट्रेड कर सकते हो प्लस चार्ट्स में आप क्या देख सकते हो एंड जो रेट्स लेंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे सो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर द स्क्रीन आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन सो क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के चार्ट अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे करंटली क्रूड ऑयल फ्यूचर्स इज ट्रेडिंग एट अराउंड 9041 सो ये करंट प्राइस चल रहा है अभी इसका फ्रॉम लास्ट 2 to 3 days if you have seen last 2 to 3 days if you have seen prices में एक करेक्शन आया था लास्ट yesterday only we seen a correction of around 9 to 10% in crude oil prices so उसका एक रीजन था जो ऑनगोइंग कंसर्न चल रहे हैं यूएस एंड ईरान के तो यूएस एंड ईरान के कंसर्न जो चले उसमें एक एक्सियस करके एक मीडिया एजेंसी है इन द यूएस दे रिपोर्टेड दैट ये जो कंसर्न है वो ऑनगोइंग कंसर्न जो है ये आगे जाके सॉल्व हो सकते हैं सो दिस ट्रिगर्ड अ डाउनफॉल इन क्रूड प्राइजेस ऑलरेडी जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड थे ऑन द हायर साइड बिकॉज ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस ऑनगोइंग वॉर जो ऑनगोइंग वॉर चल रहा है वो अगर और ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है देन वी कुड सी शार्प राइज अगेन ऑन द हायर साइड बट अभी जो कल के जो रिपोर्ट्स आए हैं एंड जो कमेंट्स है उसके हिसाब से प्राइजेस हमें नीचे आते हुए दिखे थे ऑलमोस्ट 10% का फॉल दिखा था हमें सो लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू द चार्ट अभी 9027 चल रहा है क्रूड का प्राइस ये जो आपको चार्ट पे जो लेवल्स मार्क दिख रहे हैं टू जो लाइंस दिख रहे हैं आपको ये मार्क तो ऊपर में 91887 और 9190 का एक लेवल रहेगा एंड नीचे एक रहेगा अराउंड 8900 का लेवल तो ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं हो रहे ऑन ईदर साइड आई वुड से ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड तब तक हमें एक बड़ा मूव कैच करने नहीं मिल सकता आज के दिन में सो इफ यू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम पे वी हैड शेयर्ड एक्सपायरी नोट टुडे in the morning जहाँ पे we had suggested to sell 9700 call and 8300 put जिसका combined premium था around 37 so that combined premium has dropped now इसे बोलते हैं short triangle whenever you are expecting कि prices में बहुत ज़्यादा movement नहीं आने वाली then you can sell out of the money call and out of the money put and you can try to make money out of it अगर prices वहीं पे साइडवेज रहते हैं देन दिस प्रीमियम कैन गो टू जीरो सो दिस इज हाउ वी सजेस्टेड अ शॉर्ट ट्रायंगल उसका जो प्रीमियम है ऑलरेडी डिके हो चुका है समवॉट बाय अराउंड 10 to 15 रुपीज अगर आप करंटली प्राइसेस देखोगे एनएससी के क्रूड के ऑप्शंस के 9700 एंड 8300 के कॉल एंड पुट उसका अभी कमेंट प्रीमियम अराउंड 22 या 25 के आसपास चल रहा है वी सजेस्टेड एट अराउंड 37 सो गोइंग फॉरवर्ड अभी आज के दिन में क्या करना चाहिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी द रेंज 9180 to 8900 जब तक ये दो लेवल्स नहीं ब्रेक हो रहे हैं वी वोंट बी एबल टू कैच द बिगर मोमेंटम जैसे ही 8900 ऑन द लोअर साइड ब्रेक होता है वी कैन सी प्राइसेस गोइंग बैक टुवर्ड्स 8600 8500 लेवल्स एंड आल्सो ऑन द हायर साइड इफ 9200 का लेवल ब्रेक होता है देन वी कैन सी प्राइसेस गोइंग टुवर्ड्स 9500 एंड 9700 काइंड ऑफ लेवल्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फॉल आया था ऊपर से उसका जो 0.68 retracement आता है that is at around 9700 so that will act as a key resistance and also अगर आप NSE के options chain देखोगे तो NSE के option chain में 8500 का put and 10000 के जो calls है इसमें सबसे ज़्यादा open interest है so what is open interest ये होता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा concentrated है अगर concentrated contracts हैं अगर कॉल साइड में 10,000 का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है वहां पे सो दैट मींस 10,000 इज द की रेजिस्टेंस फॉर द डे एंड अगर 8,500 के नीचे पुट साइड में अगर कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है देन 8,500 विल बी द की सपोर्ट फॉर द डे सो ये दो लेवल्स बहुत ज्यादा एक्ट करेंगे आज के दिन में एज वी हेड इनटू द सेकंड सेशन जैसे यू ऑल नो कमोडिटीज इज अ 14 आवर्स मार्केट सो इसमें वी गो थ्रू
थ्री टाइप्स ऑफ सेशंस थ्रू आउट द डे। जैसे कि मार्केट सुबह ओपन होता है 9 बजे, देन वी मोस्टली रिलाई ऑन द एशियन मार्केट। तो एशियन मार्केट में अगर कुछ चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट आता है। देन एज वी प्रोग्रेस टू द मिड सेशन अराउंड 1-1:30, वहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं, तो 12:30 के बाद तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे देखने मिलता है। एंड एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स इवनिंग सेशन 6 के बाद जो भी डेटाज आते हैं, यूएस डेटाज आते हैं, प्लस यूएस मार्केट ओपन होता है एट अराउंड 7 o'clock, सो उसका इम्पैक्ट आता है। सो द यूएस मार्केट ड्राइव्स द मेन मोमेंटम इन द इवनिंग। सो इवनिंग में एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द इवनिंग हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है क्रूड के ऑप्शंस में। सो लेट्स क्विकली रिकैप अगेन कि 9,700 का कॉल and 8,300 का put, which you will, if you see 8,300 का put is trading at 12 now and 9,700 का call is trading at 9 now. So roughly अगर आप ऐड करोगे इसको तो ये 21 होता है। we had suggested at 37, तो अभी 21 चल रहा है। So it's already decaying. So if prices stay between this range only, अगर यही रेंज में prices रहते, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, तो ये प्रीमियम जीरो होने के चांसेस हैं। So and on the options buying side, वी ऑफ कोर्स ऑप्शन बायर्स भी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं जो ऑप्शन बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। सो ऑप्शन बाइंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि 8,900 जैसे ही ब्रेक होता है, आप 8,800 8,700 के जो पुट्स रहेंगे उनमें आप बाइंग पोजीशन में बैठ सकते हो। अगर आप 8,900 का लेवल ब्रेक होने के बाद अगर आप 8,700 के पुट्स देखते हो, विच इज करंटली ट्रेडिंग एट 41, 8,700 पुट, एंड 8,600 पुट इज ट्रेडिंग एट 28। So अगर 8,900 ब्रेक होता है, we could see this put going towards 60 or 70 kind of level, तो वहाँ पे आप एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो 8,700 के पुट्स में। एंड ऑन द अपर साइड अगर आप देखोगे 9,200 का लेवल ब्रेक होता है, देन आप 9,500 के कॉल्स जो है वो आप बाय कर सकते हो। अगर 9,500 का कॉल अभी चल रहा है 19 रुपीज, बट अगर 9,200 ब्रेक होता है यहाँ पे, देन इट विल गो टू अराउंड 40-50 रुपीज काइंड ऑफ प्रीमियम, तो वहाँ पे आप 9,500 के कॉल्स बाय कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द क्रूड ऑयल। लेट्स गो थ्रू अदर कमोडिटीज ऑल्सो, जैसे कि गोल्ड में भी बहुत ज्यादा मोमेंटम है अभी। सो लेट्स गो थ्रू क्विकली गो थ्रू द गोल्ड चार्ट। आई होप यू आर एबल टू सी द गोल्ड चार्ट नाउ। सो ये अगर आप गोल्ड मार्केट देखोगे, गोल्ड मार्केट भी बहुत ज्यादा न्यूज ड्रिवन था। ओवरऑल कमोडिटीज मार्केट इज नाउ न्यूज ड्रिवन। प्रीवियसली इट यूज्ड टू ट्रेंड इन अ प्रॉपर ट्रेंड, नाउ इट्स बिकॉज ऑफ द यूएस ईरान का जो वॉर चल रहा है, जो वॉर लाइक सिचुएशन, उसकी वजह से प्योरली इट्स न्यूज ड्रिवन नाउ। जो भी न्यूज आती है एक दिन में उसका इम्पैक्ट आता है एंड प्योरली न्यूज ड्रिवन मार्केट हो जाता है। सो रिसेंटली गोल्ड में एक फॉल आया था बिकॉज यूएस ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुके थे। सो बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड प्राइसेस फेल, एंड यहाँ पे आप अगर देखोगे 4,500 काइंड ऑफ जोन जो है, दिस इज द चार्ट ऑफ स्पॉट गोल्ड, 4,500 काइंड ऑफ जोन पे यहाँ पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट आया है, एंड यस्टरडे वी सॉ दैट ब्रेकआउट, दिस ब्रेकआउट इज सस्टेनिंग नाउ। ये ब्रेकआउट के ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है, एंड दिस ब्रेकआउट कैन टेक गोल्ड प्राइसेस टुवर्ड्स 4,900 काइंड ऑफ लेवल्स। ये स्पॉट गोल्ड पे अगर 4,700 टू 4,900 अगर हम लोग पकड़ते हैं, सो इट्स ऑलमोस्ट 5% आई वुड से। तो 5% अपसाइड मूव इज पॉसिबल इन नेक्स्ट फ्यू सेशंस इन गोल्ड। सो इसमें भी आप गोल्ड में पोजीशंस बना के चल सकते हो। अगर गोल्ड आप ट्रेड करते हो तो गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट से MCX पे, तो आप गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ट्रेड कर सकते हो। क्रूड ऑयल एक्सपायरी स्पेसिफिक वी डोंट हैव अ मच मूव नाउ एज ऑफ नाउ, बट अगर 9,000 भी अगर ब्रेक होता है, आई वुड सजेस्ट वी विल वेट फॉर सम टाइम, लेट्स वेट फॉर अ 15-minute कैंडल टू क्लोज, एंड देन इफ वी सी एनी ट्रेड वी विल गो फॉर द शॉर्ट साइड, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो इट सीम्स कि ये नीचे के साइड में ब्रेकडाउन होने वाला है। सो लेट्स कीप अ ट्रैक ऑन 9,000 पुट which is currently trading at 138. We already have a official call which is going on in 9,000 put, which is 134 से हम लोगों ने दिया था, so 134 पे आप buy कर सकते हो, and you can keep a stop loss of around 105 or 100 in this trade. अगर जब तक ये 9,100 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, you can be in this trade. If prices go to 8,900, this premium can go up to
around 170 180 kind of levels, then you can book the profits. So we will wait for some time. अगर 9000 का लेवल ब्रेक होता है तो we will get a confirmation. ये अगर लेवल ब्रेक होता है then it's a good trade to go. But there's more momentum in the gold. So gold अभी देखोगे आप तो अभी रिसेंटली एक घंटे में ही अगर देखोगे आप तो ऑलमोस्ट $50 बढ़ गया है. दिस इज द आवरली कैंडल ऑफ गोल्ड. सो ये 4694 का लो था यहाँ पे एंड 4746 इट्स नाउ ट्रेडिंग. सो ऑलमोस्ट ये $50 बढ़ गया है. कल का भी हाई ब्रेक कर चुका है. सो इट्स शोइंग दैट इट्स गोना गो अप. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बाय गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स. सो गोल्ड मिनी, लेट्स सी what it's trading. MCX गोल्ड मिनी फ्यूचर्स करंटली 153,600 पे ट्रेड कर रहे हैं. तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो. 151,500 का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें. एंड ऊपर में आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 1,50,000, आई वुड से 56,000 57,000 काइंड ऑफ लेवल्स. सो ये एक ट्रेड रहेगा आज के सेशन के लिए. एंड क्रूड जैसे ही मैंने बताया कि शॉर्ट साइड में रहना बेटर रहेगा. सो इट्स गोइंग ऑन द डाउन साइड. सो 9000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, वी विल बी एबल टू सी मच मोर डाउन. अभी 138 का जो पुट था दैट इज नाउ ट्रेडिंग एट 144. इफ एनीवन वांट्स टू बाय, if anyone wants to play today's expiry, I would suggest be on the short side in the crude. 8993 हो चुका है. So 145 हो गया वो पुट. Apart from gold, if we look at the chart of spot silver is also positioning itself for a upside. So 7886 का अभी लेवल है यहाँ पे on the spot side. तो spot में अगर आप इसका हायर टाइम फ्रेम चार्ट देखते हो तो इसमें भी एक अराउंड काइंड ऑफ बॉटम बना के इट्स ट्राइंग टू ब्रेक आउट. सो इसका इमीडिएट टारगेट कुड बी अराउंड 83 काइंड ऑफ लेवल्स, जो उसका रिसेंट स्विंग हाई था. तो 83 तक इसके टारगेट्स आ सकते हैं. I would say which is again 5 to 7% from here. तो 83 तक टारगेट्स इसके पॉसिबल है एंड गोल्ड के $4,900 तक पॉसिबल है. सी एज वी स्पीक क्रूड ऑयल इज गोइंग ऑन द डाउन साइड. जैसे वी एक्सपेक्टेड कि क्रूड कुड बी ऑन द डाउन साइड because of the yesterday's news also, and the price action is also suggesting that it's not going to catch up on the higher side. So जो हमारा 138 का पुट था that's now trading at 150. 156 it is now. 8973 हो चुका है. 157 8970 हो चुका है. 8964. ओह, एज वी स्पीक 8949 50 रुपीज का फॉल आ चुका है हमारे सामने. 167 हो चुका है पुट. तो अगर कोई किसी ने बाय किया है, दे कैन क्विकली बुक फ्यू देयर पार्शियल प्रॉफिट्स. 170 हो चुका है पुट. सो पार्शियल प्रॉफिट्स आप बुक कर सकते हो. यहाँ पे एक सपोर्ट है जो जैसे मैंने बताया 8,900 तक का सपोर्ट है. बट ये एक क्विक ट्रेड हमें लाइव सेशन में मिल चुका है विच टुक अस फ्रॉम 138 to 174 नाउ. यू कैन कीप बुकिंग प्रॉफिट्स. 180 now. So I would say this is the trade of the session. 185 now. So 138 to 185, it's almost 50 rupees we got in this trade. 8,900 support पे आ चुका है. Once I would suggest everyone to book full profits in this trade. 138 to 185 it went. 8,900 अगर support break करता है then again you can go for fresh trade. I would suggest to book full profits from 138 to 185. 8922 it's still going down. So जो कल का न्यूज है, आई एक्सपेक्ट कि ये जो ऑनगोइंग टॉक्स है दे कुड डेवलप इनटू पॉजिटिव वे. तो पॉजिटिव वे में अगर ये डेवलप होते हैं, अगर ये टॉक्स, तो क्रूड के लिए और ज्यादा ये निगेटिव रहेगा. अगर हम इसका वीकली चार्ट एक बार ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज वेरी स्मॉल इंट्राडे चार्ट 15 मिनट्स विच वी ऑब्जर्व फॉर एक्सपायरी ट्रेड. 138 से हमारा 188 ऑलमोस्ट आ चुका है, जो 9,000 का पुट था वो. अगर हम इसका वीकली चार्ट ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ क्रूड ऑयल. सो हमने देखा था कि इन द मंथ ऑफ मार्च वी सॉ दैट ट्रिगर. इन द मंथ ऑफ मार्च वी गॉट द ट्रिगर. जो न्यूज आया
ईरान एंड यूएस का एंड इसराइल का जो वॉर स्टार्ट हुआ, वहां से यहाँ से 6,600 से लेके हमें यहाँ तक 10,800 तक देखने मिला था ये क्रूड। तो नाउ इफ वी लुक एट द वीकली कैंडल्स, अगर आप ये वीक का कैंडल देखोगे उसके बाद ये वीक का कैंडल देखोगे, ये वीकली कैंडल जो एक टॉप पे बना है, दिस इज द बेरिश कैंडल, एंड उसके बाद तुरंत एक बेरिश कैंडल बना था। तो ये जो टॉप है इसको अभी तक क्रॉस कर नहीं पाया है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ बेरिश रिवर्सल ओवर हियर। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर जो कल का लो है 8,300 का, उसके नीचे अगर दिस वीक इफ वी क्लोज 8,300 के नीचे, सो दिस मोमेंटम, ये मोमेंटम जो ऑन द हायर साइड था, ये स्टॉप हो जाएगा कहीं पे। और जो प्री वॉर लेवल्स थे, which is at around 6,500 and 6,600 kind of on the crude, on the M6 crude or NSE crude, तो वहां तक हमें आते हुए देख सकते हैं हम। So this is the level I'm expecting if we close below 8,300 uh, on the weekly front। वीकली पे अगर हमें क्लोजिंग मिलता है तो 8,300 के नीचे, तो हम फिर से 7,000 के लेवल्स के नीचे आते हुए क्रूड के प्राइसेस देख सकते हैं। सो लेट्स क्विकली लुक एट द इंट्राडे चार्ट। हमें ये मूव कैच करने मिला है, 8937 आया है, लो बनाया है इसने आज 8907। एग्जैक्ट जो मैंने आपको बताया था 8,900 का आज सपोर्ट रहेगा, 8,900 का सपोर्ट लिया है अभी। अगर 8,900 इवनिंग सेशन में ब्रेक होता है देन वी कुड सी मच डीपर फॉल, जो हमें फिर से कल के लेवल्स तक लेके जा सकता है, अराउंड 8,400 8,300 काइंड ऑफ लेवल्स। बट वी वेर एबल टू कैच अ गुड ट्रेड 138 to 185, हमारा जो 9,000 का ऑप्शन था, वी वेर एबल टू कैच दैट ट्रेड। गोल्ड, आई वुड से गोल्ड इज ट्रेडिंग एट अराउंड 4740। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आई वुड सजेस्ट यू टू पोजिशन योरसेल्फ ऑन द हायर साइड फॉर गोल्ड। यहाँ पे आप जो भी डिप मिलता है यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। जैसे मैंने ये चार्ट आपको डिस्प्ले किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि द ब्रेकआउट हैज अकर्ड, इसका जो पैटर्न का टारगेट है विच इज कमिंग एट अराउंड 4,900, जो इसका रिसेंट स्विंग आया था, तो वहां तक गोल्ड के जाने के चांसेस हैं। So I would suggest you to position yourself for the buy side on the gold, and crude and gold usually trade in the opposite direction. So that's why we have been observing since last 2-3 months, ये जो situation चल रहा है इसमें हमने देखा होगा कि क्रूड और गोल्ड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब भी क्रूड ऊपर जा रहा है, वी हैव सीन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस फॉलिंग, सिल्वर रिएक्टिंग रादर मोर देन गोल्ड, एंड जब भी क्रूड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो वी हैव सीन सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्टिंग ऑन द हायर साइड। तो वैसे ही हो रहा है, ये कल भी क्रूड के प्राइसेस नीचे आए, वी सॉ गोल्ड एंड सिल्वर ऑन द ब्रेकआउट, एंड टुडे आल्सो द सेम सिनेरियो कुड कंटिन्यू। सी 8,900 के आसपास जाके तुरंत रिवर्स हुआ, दैट्स व्हाई 8,900 बी द going to be the key support for the day, but we have already got a good trade, so let's wait for another trade. If we get a good trade in the evening session, we will surely post it on the telegram and forward it to you. Also, jo option sellers hai, I would suggest them to keep sharp focus on 9,700 calls and 8,300 puts। तो वही रहेगा आज के लिए, 9,700 calls and 8,700 puts, 8,300 puts for the short triangle side। Now जैसे मैंने बताया 8,900 will be the key support, so 8,900 से प्राइसेस रिवर्स हो चुके हैं। Let's see if we are able to catch another trade। जैसे होता है कि एक बार रिटेस्ट करके फिर से नीचे जाता है, तो let's see if we are able to catch another trade। So now the price for that 9,000 put is at 154। let's see if we can buy this again। so अगर ये 8,984 है एंड अगर ये 9,000 के ऊपर नहीं जा रहा है अगेन, एंड if it starts coming down to 8,952, again we will enter the 9,000 put। let's wait for some time। 8,985, gold is also stable now।
आई वुड सजेस्ट ऑल द ऑप्शन बायर्स, जो भी ऑप्शन बायर्स है वो आज शॉर्ट साइड में ज़्यादा ट्रेड लेने को देखिए। सेल ऑन राइज काइंड ऑफ ट्रेड्स में आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। जब तक ये 9,200 का लेवल नहीं ब्रेक हो रहा है तब तक ये सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट रहेगा आज के लिए। If it goes below 8950, we are again going to enter 9,000 put, which is currently trading at 157. Or rather, you can go for the little out of the money also, 8,900 put, which is trading at 111 now. अगर 8950 के नीचे जाता है प्राइस, आई वुड सजेस्ट एंटर इन 8,900 पुट। एंड इसमें आप अराउंड फ्यूचर्स में अगर देखोगे तो 9,000 का स्टॉप लॉस है। 9,000 के ऊपर जब तक नहीं जा रहा है, यू कैन होल्ड ऑन टू इट। Gold is trading at 4,738 now. So you can enter in the M6 gold, which is trading at 153,480. आप अगर गोल्ड का डेली चार्ट भी देखोगे आपको कैंडल्स एकदम अजीब दिखेंगे, क्योंकि इट हैज बीन रिएक्टिंग टू द न्यूज ओनली फ्रॉम लास्ट 2 months। उसके पहले का अगर आप चार्ट देखते हो, सो वी हैव सीन अ गुड रन अप, जहाँ पे एक ट्रेंड था on the upside, but in the last 2 months 3 months we have seen, because of the US Iran conflict, कि कहीं पे एक दिन गैप अप हो रहा है, कहीं पे एक दिन गैप डाउन हो रहा है। वी हैव सीन अनयूजुअल काइंड ऑफ प्राइस एक्शन। ये स्टेबलाइज होने को थोड़ा टाइम लगेगा। इफ दिस सिचुएशन स्टेबलाइजेस, जो कल जो न्यूज आया अगर वो सच होता है, एंड अगर ये यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का जो है कुछ सॉल्यूशन निकल आता है, देन वी कुड सी गोल्ड अगेन राइजिंग टू द न्यू हाइज। लेट्स लुक एट द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल 8963 चल रहा है। 8950 अगर ब्रेक होता है, देन अगेन वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द शॉर्ट साइड। इसमें आप 8,900 का पुट अभी आपके रडार पे रखना। 8,900 का पुट जो भी अभी चल रहा है अराउंड 118 चल रहा है, 111 चल रहा था। So we were able to capture this moment. Let's see if we will be able to capture the another fall. Like अगर 8,900 के नीचे जाता है तो हमें वो फॉल कैप्चर करने मिलता है नहीं। इन द नेक्स्ट 10 minutes we will decide. Apart from this, I would suggest not to trade 2% of your total capital on a single trade. So that's what professional traders do. So whatever trades I'm suggesting over here, I would suggest everyone to keep track of your own risk management and trade accordingly, because you should not put all your eggs into one basket. So I would suggest you to keep track of your own risk management also. So it's not breaking below 8950. 8950 के नीचे भी ब्रेक नहीं कर रहा है ये। बट इफ इट ब्रेक्स, यहाँ पे थोड़ा मतलब रेजिस्ट कर रहा है प्राइस, बट इट्स नॉट ब्रेकिंग ऑन द लोअर साइड। बट वी विल ऑब्जर्व फॉर नेक्स्ट आई वुड से 5 minutes. If we are not getting any trade, we would call this a profitable session for the day. So 153,420 is gold mini. Crude oil futures are trading at 8,966. On the I would say WTI front, it's trading at 94. तो WTI में जो लेवल था उसकी हम बात करेंगे। अगर जो एक ब्रेकआउट आया था, दैट वाज एट अराउंड $70, $77। तो $70 के बाद जो ब्रेकआउट आया था, वो उसके बाद अगर आप प्राइस एक्शन देख रहे हो अगर वीकली चार्ट्स पे, इट्स वेरी इरेशनल। यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, इट्स नॉट इधर साइडवेज, यहाँ पे बहुत इरेशनल प्राइस एक्शन है। बट इट हैज समहाउ फॉर्म्ड अ बेरिश रिवर्सल ओवर हियर। सो अगर ये बेरिश रिवर्सल if it has to continue, then we will see prices heading back lower towards the pre-war era, जो यूएस ईरान के
एस्केलेशंस हुए थे, उसके पहले जो प्राइजेस थे वहां पे आते हुए हमें देख सकते हैं 72 और 75 काइंड ऑफ लेवल्स ऑन द WTI एंड MCX ऑफ कोर्स 7000 के नीचे आ सकता है. सो अगेन क्रूड इज बिलो 8957 आ चुका है. 8950 के अगर नीचे सस्टेन कर रहा है ये, आई वुड सजेस्ट टू बाय 8900 पुट, और आप ये स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो. ये कैंडल का जो हाई है विच गेव अस अ ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन जो कैंडल है इसके हाई जो है वो आप स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो. सो नाउ द 8900 put is at 120. So we already did a profitable trade in 9000 put from 138 to 185. Now let's wait if we can catch another moment in this next, I would say, 5 or 10 minutes. 8954 it is now. 8952. So you can enter now if it breaks below 8950. Still it's not breaking. 8951 मारा है. सो लेवल्स डू मैटर. अपने यहाँ पे देखा होगा, जैसे मैंने बताया था ये मूव आने के पहले ही कि 8900 का सपोर्ट रहेगा आज के लिए, वहां तक प्राइसेस एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो प्राइसेस अटेम्प्टेड टिल 8907, अगेन रिवर्स, नाउ 8960. अभी 8950 को भी वो रिस्पेक्ट कर रहा है. इफ 8950 ब्रेक होता है देन अगेन वी कुड सी दिस गोइंग बिलो द न्यू लो फॉर द डे. Let's see, we will wait for the closing of this 15 minutes candle. अगर ये 15 minutes candle 8950 के नीचे close होता है then it's okay. Otherwise of course we will push other trades through Telegram and all our social media platforms where you will be able to trade. Now it's trading at 8956. 50 का लेवल अगर ब्रेक करता है we are going to go short again. 8951. As you are approaching towards the end of this session, I will of course give you some insights how to trade this, how to navigate today's expiry going into the second half of this session. Those who are option sellers, I have already suggested कि 9700 and 8300 के कॉल एंड पुट्स, ये दोनों आप रडार पे रखना, इनको आप सेल कर सकते हो. If you want to go little aggressive, you can go to 9600 also or 9500 also on the higher side, on the call side. And on the put side, I would suggest you can go to 8400 max. Don't like इसमें आप ज़्यादा ऊपर के पुट्स को बेचना मत, सेल मत करना, because the overall trend is on the downside. If you want to go aggressive, go aggressive on the call side. Calls आप बेच सकते हो aggressively on the higher side. 8958 is trading now. So purely this is going to be a news driven market in the evening session as we head into the evening. आज unemployment claims का data भी है, so of course there could be some announcement from Trump or anyone, so वो एक impact आ सकता है क्रूड के प्राइसेस में. Of course we are heading towards the end of this candle. 1 minute बाकी है, but we have not like seen price breaking below 8950. So 8950 के अगर नीचे ब्रेक नहीं करता है, we won't take this trade. 8950 के नीचे ब्रेक करने के बाद ही आप ट्रेड लेना, as we have already done a profitable trade. Okay, so let's go through other commodities. Other commodities में I would suggest कि commodities में अगर आप ट्रेड कर रहे हो अभी evening, if you are an intraday trader, of course you should stick to the evening session more, क्योंकि evening session में like real breakouts and real breakdowns happen in the evening session because of the US market and its major impact on commodities because of the key data that are released in the evening and all. तो आप इवनिंग सेशन में ज़्यादा बेटर ट्रेड कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो. इफ़ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको सेटअप्स देखने हैं. जैसे मैंने अभी ये आपको गोल्ड में दिखाया, जो गोल्ड में सेटअप था 4 आवरली कैंडल पे,
विच इट रीटेस्ट हुआ है आज, ये कल का ब्रेकआउट था, ये आज रीटेस्ट हुआ है एंड अगेन इट्स गोइंग अप. सो ये अभी कंटिन्यू होके 4900, 4850, 4900 तक जा सकता है. So this is the kind of positional trade that you can take. And if you want to trade intraday, you can look at the lower time frames, 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट्स पे आप देख सकते हो, which we did for the crude oil. Crude oil पे हम लोगों ने 15 मिनट एंड 5 मिनट के कैंडल्स पे ट्रेड लिया था अभी. So we are not getting a breakdown below 8950. So of course we will wind up today's session. As we approach towards the end of this session, again, one last trade. If you see price going below 8950 and it's sustaining below 8950, take the puts of like you buy the puts of 8900 which are trading currently at around 119. तो ये अगर 8-900 के नीचे जाता है तो आपको ये प्राइजेस 150 160 तक जाते हुए दिख सकते हैं. जैसे हमने ये मूव कैच किया वैसे नेक्स्ट फॉल कैच करने मिल सकता है. And of course we will be doing this live for every expiry. Next will be M6 crude expiry, which is in the next week. So of course we will meet in the same session at the same time on the M6 crude expiry day. And then there will be natural gas and there will be silver mini and gold mini also. So of course we will be doing this kind of session for all the expiries. Thank you all for joining. I have a great trading session. We have already done a profitable trade, so I call this a profitable session for the day. Thank you all for joining.
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.